Mass into velocity is momentum. Lambda is equal to h upon p, that is momentum. But what is p यहाँ पे? P is momentum. ध्यान दीजिएगा. We know that kinetic energy is equal to half mv square. Half of mv square. If I multiply 2 on both sides, I will get 2 into kinetic energy. It is equal to mv square. Now, if I multiply 2 on both sides, I will get 2 kinetic energy. And in this side, 2 and will cancel. I will get 2 kinetic energy is equal to mv square. Now I will multiply m on both sides. I will get 2m kinetic energy is equal to m square v square. Now you can write this as 2m kinetic energy is equal to mv whole square. Now we know that mv is nothing but momentum, and if I put this on that side, I will get this as root 2m kinetic energy. So lambda we can make also as h upon root 2m kinetic energy. Like one more thing, if electron as stated by applying voltage V, kinetic energy it is equal to electron volt. In that case, lambda becomes equal to h upon under root 2m electron volts, whatever electron volt voltage we have applied. Please write it here. Raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done. Waiting for Adil and Ali. Just waiting for Ali now. So hopefully you have done a few lines. Those who are done writing, please write a question. What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with velocity of 10 meter per second? Of 10 meter per second. Okay, this is a very easy formula based question. We're asking the wavelength, okay, and what we'll apply the de Broglie's equation h upon mv. So h is 6.636 into 10 to the power minus 34 joule per second, joules per second, and
This is divided by mass, that is 0.1, into velocity, that is 10 meter per second. Now, यहाँ पे आपके पास there are few things that we need to consider here. For example, what is kg? Sorry, what is joule? Does anyone know? Like joule, it is not a unit, as in it's not a basic unit. ना basic unit तो नहीं है joule. What is one joule? Joule is a unit of energy, है ना? तो उसका तो बताइए जैसे what is one joule? कोई idea what is one joule? One joule, it is equal to how much? देखिए बहुत आसान है. Whenever you need to determine the basic units में ना joules, joules किसकी unit है? Energy की unit है, right? Now you can for example kinetic energy ले लीजिए या फिर potential energy ले लीजिए, उसके फॉर्मूले से आराम से निकल जाएगा. For example kinetic energy क्या होता है? Is equal to half m v square. हाफ का तो कोई यूनिट नहीं है. मास का यूनिट क्या होगा? केजी होगा. वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. इफ आई हैव काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1 जूल, तो जूल का यूनिट क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का inverse minus 6. Does this make sense? Now we will, first of all, we are going to simplify the unit. 6.636 into 10 to the power minus 34 divide by 0.1 into 10 क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा ना. Does this make sense? इसमें नहीं. 0.1 into 10 it will be 1 only, है ना. ये तो इतना ही तो हो गया, यहीं तक हो गया. ठीक है. Now let us look at the units. Joule is nothing but kg meter square second inverse minus 2 divide by, आपके पास यहाँ पे एक मीटर है, एंड देन हियर वी हैव सेकंड इनवर्स, और ये जूल का सेकंड यहाँ पे एक सेकंड. जूल, दिस मच इज जूल, दिस इज द सेकंड मीटर पर सेकंड. तो देखिए एस टू दी पावर माइनस 2 है यहाँ पे, ये दोनों सब कट जाएंगे सारे, एस कट जाएंगे आपके पास, केजी बच जाएगा. केजी, अच्छा नहीं केजी नहीं बचेगा, 0.1 केजी था तो नीचे केजी भी है. केजी एंड केजी गेट कैंसिल, एम एंड square of m get cancelled, you will get the values in meters. That is a 6.636 into 10 to the power minus 34 meters. This is the wavelength of a ball of mass 0.1 kg, that is 100 gram, traveling in a speed of 10 meter per second. आसान सा बिल्कुल न्यूमेरिकल, no calculations needed. Copy this down, raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done. आराम से समझ लीजिएगा what we have done with the units and everything. Oh, everyone is done. नहीं notification नहीं आ रहा Zoom पे. चलिए नेक्स्ट देखिएगा. Derivation of Bohr's postulate with de Broglie theory.
थ्योरी हाइपोथेसिस एक ही चीज है. So de Broglie also said one more thing, that electron wave should be in phase, should be in phase के in same phase ज्यादा बेहतर होगा लगता है ना, in same phase. क्या मतलब इलेक्ट्रॉन शुड बी इन सेम phase? ध्यान दीजिएगा. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शो यू दिस. He said that for the for the third orbit मान लेते हैं, थर्ड ऑर्बिट में आपके पास तीन वेव होंगे, फोर्थ ऑर्बिट में चार वेव. कैन यू सी दैट? देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा का पूरा, एक वेव आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस विल बी वन वेव. ये यहाँ से देखिए यहाँ तक, दिस इज वन वेव. ठीक है. देन द सेकंड वेव स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, दिस इज द सेकंड वेव. देन द थर्ड वेव इज दिस वन. ये थर्ड ऑर्बिट का वेव है. देयर आर थ्री वेव्स इन द थर्ड ऑर्बिट. फोर वेव in the fourth orbit, fifth in the fifth orbit, and six waves in the sixth orbit. If I want to calculate the wavelength here, यहाँ से यहाँ तक देखिए, this is one crest, this is one crest, this is another crest. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा. This crest is also lambda, and from here to here it is also going to be lambda. So I can say that the first one here, it is of what? It is 3 lambda. This one is having 4 lambda. This one is having 5 lambda. This one is having 6 lambda. As you can see that the circumference of a particular orbit, ये क्या है पूरा का पूरा? This is the circumference ना. Circumference of the orbit is integral multiple of lambda. Either it is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ऐसे 1.5, 2.5 कुछ नहीं आ रहा. So he said, Broglie said that circumference of an orbit is integral multiple, is integral multiple of lambda. अब ध्यान से देखिए. Now he gave the mathematical proof. Circumference of a circle or an orbit can be given 2 pi r, which will be equal to n lambda, which will be equal to n lambda. That means n is any number, n is the orbit number, principal quantum number 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है. So we can also write 2 pi r, it is equal to n h upon mv. ये h upon mv कहाँ से आया? From the de Broglie hypothesis. Lambda is equal to h upon mv यहाँ से. So we have substituted that value here, n h upon mv. Now further on, I will take this mv that side. I will have 2 pi r mv. It is equal to n h upon, is equal to nh बचेगा ना, mv को तो उधर लेके आना, is equal to nh. अब यहां से आप क्या कीजिए ना, mvr it is equal to nh upon 2 pi. अभी तो आप लोगों ने शायद रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा होगा. ठीक है. सो मोमेंटम होता है m into v, बट if there is something which is in circular motion, उसके लिए जो मोमेंटम होता है उसको बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम, एंड द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इज mvr. तो ये आपके पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम is equal to, this mvr is what? Angular momentum. It is equal to nh upon 2 pi. यहाँ पे एक चीज देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of h upon 2 pi. So angular momentum will be either 1 h upon 2 pi
2h/2 पाई, 3h/2 पाई, ठीक है. It will never be 2.5, ऐसा कुछ नहीं होगा. Will be one integer which is multiplied to h/2 पाई. Now, according to Bohr, in this case, please write. According to Bohr, n it is equal to the shell number or the orbit number. And according to de Broglie, n it is equal to number of waves. Number of waves. Meaning electron in second shell will have two waves. Electron in third shell will have three waves, and so on. ठीक है. इससे बहुत ही आसान से सवाल आते हैं. Like they will give you the shell number और फिर पूछेंगे कितना waves होगा इसमें. So whatever the shell number is, that will be only the wave number. Write this down. Raise your hand once you're done. Waiting for Abir and Adil. Wait, sorry. Waiting for Abir and Ali. Adil is done. Good. Right, next. Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. So what does Heisenberg uncertainty principle explain? It tells that it is impossible to determine the exact velocity and position, exact velocity and position of
moving electrons simultaneously. Meaning, if we are going to if we are going to determine the exact position, then we will not be able to determine the velocity of electron. If we are determining the velocity of electron, then we cannot determine the exact position of the electron. That's what Heisenberg gave. There was few experiments that he did, and that's why he came up with this particular theory. I can explain this in a very minute type of case. For example, we have this nucleus, and let us suppose this is the first shell, this is the second shell, and this is the third shell. No need to draw this. I'm just explaining this, है ना? And थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए. So let us suppose the electron is revolving in the first orbit, and in order to know the position of anything, we have to interact. Either we have to see it, है ना? Either we have to see it. Very basic example if I take, then if you want to know the position of anything, then you will have to see it. In order to see anything, you need light. अगर अंधेरा रहेगा तो आप देखिए कैसे. एग्जाम्पल आपका पेन कहाँ पे है, वेर योर पेन इज राइट नाउ, हाउ वुड यू नो दैट? द लाइट्स आर टर्न्ड ऑफ, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पेन कहाँ पर है. In order to see something, we have to strike light upon it. Now, as soon as I strike light upon the electron, this electron will absorb the light and it will get excited and it will be transmitted into some other cell. As soon as I hit it with what? As soon as I hit it with light. Now, when it was in the first orbit, when it was in the first orbit, I knew its exact position. Sorry, I did not know its exact position. Rather, I knew its exact velocity because we have seen velocity in the first orbit will be constant. And we have seen that in the Bohr's model also. While it was in the first orbit, we knew what its velocity is. But as soon as I strike the light upon it, it jumped to some another energy level. And now, since we know the position, we don't know the velocity. The velocity has obviously changed. Velocity has now changed. It has shifted to what? It has shifted to third orbit. The third orbit or the fourth orbit, whatever orbit it is in right now, will be having some other velocity. So simultaneously knowing of position and velocity of a moving electron is impossible. That was Heisenberg's uncertainty principle. I hope you understood with this very basic example. Although he got a Nobel Prize, so I hope you understand कि किस type का experimentation वहाँ पे हो रहा होगा. ठीक है. But delta x, that is the error या इसको uncertainty in position भी कहते हैं, in position, uncertainty in position. उसके बाद है delta v, that is the error या uncertainty in velocity. And Heisenberg calculated that the product of error in position and velocity is always greater than or it is equal to h upon 4 pi m. Now, if I shift the m on the uh, left hand side, I will get this as delta x into m into delta v is greater than or equal to h upon 4 pi. h upon 4 pi. इसी तरह यहाँ पे लिख लीजिएगा h upon 2 pi को बोला जाता है h cross. It is equal to h cross. So we can write this as delta x into, अच्छा, m into delta v क्या हो जाएगा? mv होता है मोमेंटम. मास इज कांस्टेंट. इफ द वेलोसिटी में कुछ एरर है तो इसको क्या बोल सकते हैं? एरर इन मोमेंटम बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 पाई. चलिए h क्रॉस अपॉन 2 हो जाएगा ना. h अपॉन 2 पाई, हाँ 2 बच गया. h क्रॉस अपॉन 2. कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू डन. Raise your hand once you're done. Just waiting for Adil.
Write this question. Write this question down. So the question is saying a microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of zero point 0.1 angstrom. That means they have given the delta x. What is the meaning of within zero point 0.1 angstrom? It means that we can tell the position of an electron and the error in that position will be of zero point 0.1 angstrom. मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं that electron is, let us suppose I am saying 5.2 angstrom away from the nucleus, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ओरिजिनल आंसर होगा इट विल बी प्लस माइनस 0.1 ना, प्लस 5.2 अगर आपके पास वैल्यू आ रही है ना, इफ यू आर कैलकुलेटिंग और डिटरमाइनिंग और मेजरिंग इट एज 5.2, तो इसमें प्लस माइनस 0.1 करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट कैन मेजर, है ना। तो 5.1 भी हो सकता है, 5.3 भी हो सकता है। So they have given the error that can be present in the position is equal to 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? So delta V ये पूछ रहे कितना होगा, delta V it is equal to how much? Now if I look at now the simple form is delta x into delta V. It is either greater than or equal to मिनिमम लेके यहाँ पे होता है, what I have to take equal to कितना वहां पे हो सकता है। मिनिमम error would be delta x into delta v is equal to h upon 4 pi n. H upon 4 pi n. Now we can plug in the value. Delta v it is equal to h upon delta x into 4 into pi into n. H is 6.636. 10 की power minus 34 joule second. Delta x is equal to how much? 0.1 angstrom. That means it is 0.1 into 10 to the power minus 10 meter multiplied by 4 multiplied by क्या करें 3.14 कर दे, 4 into 3.14 for pi into mass of electron it is equal to how much? 9.1 into 10 to the power minus 31. तो 9 into 10 to the power minus 31 कर देते हैं in kgs, ठीक है। यू विल गेट दिस, यूनिट्स के भी हम बता देते हैं आप लोग को। जूल क्या होता है? जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। जूल सेकेंड्स होता है, तो जूल सेकेंड का सेकेंड यहाँ पे रहा डिवाइड। डेल्टा एक्स पोजिशन इट इज इन मीटर, तो मीटर को हमने यहाँ रखा। 4 तो 4 वैसे ही है, 3.14 वैसे ही का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 9.31। ये क्या है? दिस इज द केजी, केजी केजी केजी, ठीक है। केजी से केजी कटा, 1 मीटर से 1 मीटर कटा, सेकेंड की पावर माइनस 2 था, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? सेकेंड की पावर माइनस 1। तो विल गेट द आंसर इन मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर बचा हुआ है और सेकेंड इनवर्स बचा हुआ, ठीक है। चलिए प्लीज कैलकुलेट। कैलकुलेट दी वैल्यू। लेट मी हेल्प यू अ बिट। 6.636
into 10 to the power minus 34 uh, divided by, let me plug in the numbers here, 4 into 3.14 into 9. ठीक है? And in the denominator, what are the powers? 0.1 into 10 to the power minus 1, this will be 10 to the power minus 11 into 10 to the power minus 31. So our value will be 6.636 divided by 4 into 3.14 into 9 into 10 to the power minus 34 minus 11 plus 31. चलिए आप कीजिएगा. Try to approximate the value. You get the exact value. You exponent numbers of 10 should be exact, obviously, but the numbers, if they are a bit distance of 10. Take 2 more minutes, then I will solve it. चलिए देखिए इधर, देखिए देखिए कैलकुलेशन इसकी ना वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं है. ध्यान दीजिए. जीरो, ये एक सेकंड. इज दैट एग्जैक्ट अबीर? कैलकुलेटर वाला है या फिर कैसा है? सर एग्जैक्ट. एग्जैक्ट कहाँ से निकाल लिया आपने? कैलकुलेटर? यस सर. पक्का? हमको नहीं लग रहा एग्जैक्ट है. सही से आपने डिवाइड नहीं, ये नहीं किया शायद. 6.636 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9, ऐसे बिल्कुल सही. देखिए जरा. आई डोंट थिंक सो. देखिए जरा, देखिए. मतलब ये कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर हाउ मच? ये आपके पास होगा 34 माइनस 34 प्लस 31 बचा कितना? 3 माइनस 3. 11 में 3 गया. दिस विल बी 8. ये तो ठीक है आपका. बट यहाँ पे देखिए, 4 इंटू a bit more than 3, 4 into a bit more than 3 will be 12 point something. Make sense? Yes or no? Please tell me.
हाँ या ना बताएं। 4 into 3.14 करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या ख्याल है गाइस? मेक सेंस? अबीर, अली, Yes, sir. मेक सेंस? जल्दी, है ना? एंड सिक्स को 6.636 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ आई एम गोइंग टू दिस इनटू 2 जा अप्रोक्सीमेटली, बताइए। 6.636 को डबल करेंगे तो क्या आएगा? 12 पॉइंट समथिंग। और नीचे भी क्या आता है? 12 पॉइंट समथिंग। तो अप्रोक्सीमेटली चलेगा ना? अबीर, अली, डज दिस मेक सेंस? Yes, sir. बताएं। अब देखिए क्या आ गया आंसर। 1/9 into 2 इट इज इक्वल टू 18। तो जब भी आपके पास 18 वगैरह है ना, मल्टीपल्स ऑफ 9 में आए, तो उसको ऐसे कर लीजिए, एक 10 यहाँ से लीजिए, 10/18 इंटू 10 to the power 7 हो जाएगा। दिस विल बी 5/9। एंड 5/9 याद कर लीजिए, इट इज इक्वल टू 0.5555, तो 0.56 कर सकते हैं आप, इंटू 10 to the power 7, दिस विल बी मीटर पर सेकेंड। एंड वी कैन राइट दिस एज 5.6 इंटू 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। इफ यू ट्राई टू गेट दी ओरिजिनल आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है आपके पास, 5.8 इंटू 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट। लेट मी सी यहाँ किया। फिर देखते हैं इसमें कैलकुलेट करके। एक्स इट इज इक्वल टू 6.636 डिवाइड बाई 4 into 3.14 into 9। एन कहाँ से आ रहा है यार? एन तो नहीं यहाँ पे कहीं। आई हैव नेवर ट्राइड दिस। एक्स इट इज इक्वल टू 6.636 डिवाइड बाई क्या क्या था? 4 into 3.14 into 9। सॉल्व फॉर एक्स। ये तो कुछ ज्यादा ही कम आ जा रहा है। 0.00439 आ रहा है ये। 4 into 3 into 14 कर दिया है इसने। 3 into 14 नहीं है भाई, 3.14 है। कैसे बताएं इसको 3.14 है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब ठीक है, 3.14। देखिए कितना आ रहा है अबीर, कैन यू सी दैट? Yes, sir. अबीर, 0.058 है ना, मतलब वो 5 ही था। मल्टीप्लाई में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया ना, उस वजह से उतना है। ठीक है। दिस इज नाइस, बट दिस इज नाइस, दिस इज रियली नाइस। लिंक टू मैथ, दिस इज क्वाइट नाइस। अच्छी चीज है। चलिए, टॉपिक इज डाउन, दोज आर नॉट डन।
just waiting for Ali. Just waiting for Ali. राइट, नेक्स्ट आखिरी आप यहाँ पे है वेव मैकेनिकल। वेव मैकेनिकल मॉडल का एक और नाम है श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन नंबर 1 लिखिएगा इसमें। दिस मॉडल gives idea of wave associated wave associated with electron wave associated with electron। इसको लिखिएगा। The electron wave is described by following equation। by following equation। द इक्वेशन है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन कुछ कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई, डी ये वाला डी है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे हर एक चीज क्या क्या बता रहे हैं आपको। एक्स वाई एंड जेड, दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करनी है। दिस इज नोन एज साई। साई इज द वेव फंक्शन। Here E is the total energy and V it is the initial energy। Psi जो है यहाँ पे psi is the amplitude of electron wave। और एम्पलीट्यूड का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। देयरफॉर इट इज, और अदर इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस। Although if I am the amplitude, the square of amplitude, it talks about density। So since
psi, it is proportional to the amplitude. Intensity is also proportional to here. I can write psi square, it is proportional to intensity. बस एक आपको जो याद रखने की बात है वो ये है that psi square gives the idea of probability of finding electron, probability of finding electron per unit volume. Therefore, it has physical significance. इस टॉपिक में जो there is only two things that you need to remember. एक तो ये चीज that psi does not have any physical significance and psi square has physical significance. It does not the probability of finding electron per unit volume.